इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के सिलसिले में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने नई दिल्ली के भारत मंडपम का दौरा किया, जहां उन्होंने एआई के हवाले से बढ़ते हुए जोशो खरोश को हौसला अफजा करार दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला ने कहा है कि यह वक्त भारत के लिए निहायत मुतासिर कुन है। उनके मुताबिक नरेंद्र मोदी की क़यादत में एआई के मजबूत इकोसिस्टम की तश्कील मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। इन्होंने नौजवानों की सलाहियतों पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि आलमी सतह पर मुताअद्दिद ममालिक की शिरकत इस शोबे की अहमियत को जाहिर करती है। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने यह भी बताया कि आंध्र प्रदेश की डीप टेक क़यादत मजीद मुस्तहकम होगी। No, it is a very inspiring time. Now our Honorable Prime Minister is focusing on AI and creating that ecosystem. Great future for India. Not only this sector, overall development of the nation. Our youth and youngsters are all inspired. Now they are going to do wonders in course of time. In Delhi, it is happening. So many countries are participating. So many subjects we are discussing. And last mile, if you see in the field, everybody is inspired, highly motivated. With all these clues, in future, things are going to happen differently. I am seeing this sector for the last 3 decades. At that time, no other Prime Minister or ministers are not aware. Now, our Honorable Prime Minister is on the forefront. He is bringing everything. He is going to create excellent ecosystem. नई दिल्ली में मुनक़िदा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कंप्यूटिंग सेंटर के साथ इश्तराक करते हुए बड़े ऐलानात किए हैं। अमरावती क्वांटम वैली में एआई और क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम करने का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत किए गए हैं। वजीर आला ने कहा कि यह सेंटर अमरावती को महफूज और खुद मुख्तार एआई के लिए डिजिटल एम्बेसी के तौर पर नुमाया करेगा, जहां साइबर सिक्योरिटी और आलमी मेयार को यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमत के मुताबिक इस ताउन से बैनुल अक़वामी बेहतरीन तरीक़ेकार और आलमी शराकतदारियों को फ़रोग़ मिलेगा, जिससे आंध्र प्रदेश को काबिल एतमाद एआई क्वांटम तैयारी के लिए आलमी नक्शे पर जगह मिलेगी। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने आईबीएम के साथ अहम इश्तराक का ऐलान किया, जिसके तहत रियासत के 1 लाख बासलाहियत नौजवानों को एआई, साइबर सिक्योरिटी और क्वांटम कंप्यूटिंग में तरबियत दी जाएगी। वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि आइंदा 3 से 5 बरसों में इंडस्ट्री से हम आहंग और मुस्तकबिल के तकाज़ों के मुताबिक महारतें तलबा को फराहम की जाएंगी, जिससे रियासत की उभरती हुई टेक वर्क फोर्स को तक़वियत मिलेगी। इस सिलसिले में लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत किए गए। आईबीएम कंपनी की आला क़यादत ने भी तकरीब में शिरकत की। हुकूमत के मुताबिक ये इक़दाम नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौक़े पैदा करने के लिए अहम है और आंध्र प्रदेश को डीप टेक के शोबे में मजबूत बनाने की समत एक अहम कदम है। और इसी बीच आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि विशाखापट्टनम को डेटा हब के तौर पर तरक्की दी जाएगी, जबकि अमरावती क्वांटम कंप्यूटिंग में क़यादत करेगा। In Andhra Pradesh, we are having Amaravati centric. First time quantum computer we have launched there. As on today, all of us are talking Silicon Valley. Tomorrow, people are going to talk all over the world Quantum Valley. That is Andhra Pradesh, that is in Amaravati. If you name, yesterday Google chief has announced, Google is investing $15 billion in Visakhapatnam. AI and also data center, 1 gigawatt. Now so many companies are coming to stock data centers in Visakhapatnam. Visakhapatnam is going to become data hub and also connecting sea cable to different parts of the world, particularly USA and other parts. Now in Amaravati we have started quantum computing. Now another 2 years time we are going to produce quantum computers also. That ecosystem we are emerging. Now you name anything, historically if you see, governments are lagging behind. Today our Honorable Prime Minister is leading.
when a policy maker of the nation will have a passion to do things, then automatically it will happen. तेलंगाना के वजीर आला ने नई दिल्ली में मुनक़िदा इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के खुसूसी इजलास से कलीदी खिताब किया। रेवंत रेड्डी ने मसनूई ज़हानत के शोबे में तेलंगाना की हिकमत अमली, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इख्तिराई पॉलिसियों पर रोशनी डाली। Combine AI and robotics, machines have both physical and mental capabilities. In this context, it is important when we set an agenda for the future, and AI race has already begun. We see leadership of a few countries, companies, and people. India missed the industrial revolution and the manufacturing revolution. We played a role in services revolution, especially software and telecom. But even in software, we created services but not global products. Google Search, Google Maps, Twitter, Facebook, YouTube, and WhatsApp. We Indians use them. We Indians work in these companies, but we don't own them. We did not create them. There are two ways any country can influence a global trend: use or produce. With AI, we have to both produce and use. India must become a leader in all layers of AI: chips, green energy, data storage, platforms, applications, and services. We must create a roadmap to ensure a real leadership in top three layers. Secondly, India must create a war room with center and states to monitor and respond to AI developments. An AI war room for India is crucial because developments in AI can be very quick. Hyderabad can build an AI war room for India with support of Government of India. We need to establish an AI university of global standards with top facilities focusing on original research. We have seen many of controversies in this event. Fourthly, to lead an AI revolution, we have to manufacture GPU chips. We have to become part of the entire supply chain. We must get rare minerals. Fifth, we have to put a system to estimate job losses because of AI. India cannot delay this anymore. We have to invest massively in reskilling of people who lose. आंध्र प्रदेश असेंबली के अहाते से अपोजिशन अरकान ने एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अरकान असेंबली और अरकान कानून साज कौंसिल ने एहतजाज के दौरान तिरुपति मंदिर से मुताल्लिक तस्वीर वाले प्लकार्ड्स उठा रखे थे। पार्टी ने तिरुपति से मुताल्लिक मामलात पर ऐवान में तफसीली बहस का मुतालबा किया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडरों का कहना है कि वो इंदिरापुर डेयरी हेरिटेज अश्वराव वोट ऑन अकाउंट बजट पर असेंबली में जामे मबाहिस चाहते हैं। और पार्टी के लीडर बोसा सत्यानारायण और एमएलसी के आरजे भरत ने इल्जाम लगाया है कि कई दिनों से बहस का मुतालबा किया जा रहा है मगर हुकूमत की जानिब से खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया गया। హెరిటేజ్ సంబంధం లేదా ఉన్నదా, ఇందాపూర్ డైరీ హెరిటేజ్ దోపిడీ చేస్తారా లేదా అనేది సభలో చర్చిస్తే ఆ విషయాలన్నీ మేము చెప్తాం. అంతేగాని వాళ్ళు ఏదో చెప్పారు నాకు నేను ఒక్క విషయం అడుగుతున్నానండి, మళ్ళీ తర్వాత సభ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మాట్లాడతాను. హెరిటేజ్ అనేది ప్రైవేట్ సంస్థ కదా మాట్లాడుతుంది. మరి ప్రైవేట్ సంస్థ అయినప్పుడు ఇంతమంది మంత్రులు ఎందుకు స్పందిస్తారు? మంత్రులకి ఏం సంబంధం? వాళ్ళు మేము ప్రమాణ స్వీకారం చేశాం కదండి ఇక్కడ, రాగద్వేషాలకు అతీతంగా ఈ కార్యక్రమానికి అతీతంగా దాని అన్నిటికీ ఉంటామని చెప్పని. మరి ఏ రకంగా మంత్రులు వాళ్ళకేం సంబంధం? వాళ్ళు ఎందుకు స్పందిస్తున్నారు? అందుకు ఇది జరగాలి. దీంట్లో అవినీతి జరిగింది, దీంట్లో దోపిడీ జరిగింది, దేవదేవుని తాలూకా ప్రతిష్టకు దెబ్బతిన్నది. అందుకు ఆ ప్రసాదంపై చర్చ జరగాలని కోరుకుంటున్నాను. Currently the fifth day that we have been asking for a discussion on the Indapur dairy and the affiliation it has with the heritage company.
the government still has not answered or even ready to come and participate in a discussion regarding all the allegations that they have made for the past 3 to 4 months regarding the sanctity of TTD and the kind of words that they have used to make sure